Dear students, this is the 19th lecture of inverse trigonometric function. Actually, ये लास्ट लेक्चर ही है, क्योंकि 18th लेक्चर में एग्जाम्पलर के सभी डाउट्स मैंने क्लियर करवा दिए थे, जो भी इम्पोर्टेंट है और जो भी आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होता था, वो सब मैंने कवर कर लिया है। इस लेक्चर में मैंने जो एग्जाम्पल सिलेक्ट किए हैं वो किसी न किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स भेजे थे और वही मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो हार्डली 2 सम ऐसे हैं कि जो भी आपने डाउट्स भेजे थे उसमें से 2 सम ऐसे बचे हैं कि जो मैंने अभी तक बोर्ड पर या फिर मैंने पढ़ाया नहीं है। तो ये 2 सम में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और बाद में एक तो एमसीक्यू है, वो जब जितना भी टाइम बचेगा इतना 1-2 एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक है जो डाउट है वो सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x and the range is minus 3 pi by 2 less than x less than pi by 2। एक्चुअली इस टाइप के सम ऑलरेडी मैंने 2 सम आपको पहले पढ़ा दिया है, लेकिन इस सम में रेंज थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए जो नॉर्मली हम जो सम कर देते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब में आपने भेजा भी है तो मैंने सब कवर कर लिया है। यहाँ थोड़ी रेंज डिफरेंट है। तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, you are knowing very well sin pi by 2 plus x is equal to cos x, am I right? sin pi by 2 plus theta is equal to cos theta, pi by 2 plus x, so pi is it is half pi, so pi by 2 plus x function will be changed. If sin function is given in left hand side, then function will be converted to cos, and see the quadrant pi by 2 plus x, it is the second quadrant. In second quadrant sign is positive, that is why answer is positive. So first formula is this, second formula cos pi by 2 plus x is equal to minus sin x. Why? Because पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है हाफ पाई, मतलब half pi, so function will be changed definitely, and cos will be converted to sin. Quadrant is second, in second quadrant cos is negative, that is why answer is also negative. तो ये 2 फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ये 2 फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ tan inverse cos x upon 1 minus sin x. So tan inverse cos x is equal to sin pi by 2 plus x. We will put cos x is equal to sin pi by 2 plus x. Denominator में 1 minus sin x. What is the value of minus sin x? Now we will put minus sin x is equal to cos pi by 2 plus x. So 1 plus cos pi by 2 plus x. तो ये
में ही जो दो अलग अलग फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है वही इस सम का गेम चेंजर है। sin pi by 2 plus x and 1 plus cos pi by 2 plus x। सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये जो यहाँ पर जो दिए गए थे वो पूरा इस तरह कन्वर्ट हो गया। नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 into cos theta by 2। You know this formula, multiple and submultiple chapter में ये formula sin alpha is equal to sin alpha by 2 half angle formula। तो sin pi by 2 plus x है, उनका हमें फॉर्मूला इस तरह लिखना है 2 sin pi by 2 plus x by 2। जो भी एंगल है उनका हाफ होना चाहिए। cos pi by 2 plus x डिवाइडेड बाय 2। जो भी एंगल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एंगल है pi by 2 plus x, उनका हाफ हो जाएगा। नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या है 1 plus cos theta। If 1 plus cos theta, then formula will be 2 cos square theta by 2, right? तो यहाँ पर मैं 1 plus cos theta वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ 2 cos square theta by 2। जो भी थीटा है उनका हाफ हो जाएगा। Now 2 is cancelled, 110 cos is cancelled, so the remaining terms sin pi by 2 plus x by 2, so pi by 4 plus x by 2, and denominator cos pi by 4 plus x by 2. Now you can see tan inverse sin upon cos, so it is tan pi by 4 plus x by 2. Now tan and tan inverse are the inverse of each other. If we want to compose it, then we have to take pi by 4 plus x by 2 in the range of tan inverse. If pi by 4 plus x by 2 belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, then this will be composite. How can we check that pi by 4 plus x by 2 is in the range of tan inverse? Yes, we have given particular range which is minus 3 pi by 2, less than x, less than pi by 2, nothing else, just color exchange. Minus 3 pi by 2, less than x, less than pi by 2. This is the given range. Now divide by 2 all the terms. Minus 3 by 4, less than x by 2, less than pi by 4. Now add pi by 4 by adding pi by 4. Minus 3 by 4 plus pi by 4 less than pi by 4 plus x by 2 less than pi by 4 plus pi by 4. So 4 is LCM. This is minus pi by 2 less than pi by 4 plus x by 2, and this is pi by 2. So you can see pi by 4 plus x by 2 belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 upper interval, and it is the range of tan inverse. That is why it will be composite. So pi by 4 plus x by 2. This is the simplified form of given sum. Next. नेक्स्ट सम है, इसमें प्रूव करना है। एक्चुअली ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन मैंने प्रूफ में कन्वर्ट कर दिया है। प्रूव दैट कोशेक tan inverse cos cot inverse sec sin inverse है, तो ये sin
साइन इनवर्स है एक सेक का ब्रैकेट, कोट इनवर्स का एक और ब्रैकेट, कोस का एक और ब्रैकेट और टेन इनवर्स का लास्ट ब्रैकेट। आंसर इसमें ऑप्शन में रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर, ओनली 3 माइनस ए स्क्वायर, 4 माइनस ए स्क्वायर, ओनली ए स्क्वायर, जो भी तीन चार ऑप्शन जो भी है इसमें से हमें प्रूव करना है 3 माइनस ए स्क्वायर। इट इज आवर आंसर एंड द वैल्यू ऑफ ए इज बिटवीन 0 to 1। तो क्या करना है इसमें हमें यह करना है कि जो साइन इनवर्स है यहां पर आउटर फंक्शन है सेक और इनर फंक्शन है साइन इनवर्स। इफ सेक इज as the outer function, then sin inverse will be converted in terms of sec inverse. So convert sin inverse into sec inverse. मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड cos sec, tan inverse, cos, cot inverse, sec and साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स है कि एक वैल्यू मैं यहां फाइंड कर लेता हूं और डायरेक्ट यहां इसका इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मेरे पास है राइट एंगल है, साइन इनवर्स है डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 तो है। साइन मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। Find the adjacent side. It is 1 minus a square, right? मेरे पास जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स के बाहर है sec. Here sec is a outer function. I have to convert sin inverse into sec inverse. So sec inverse hypotenuse upon adjacent side, right? So I can put sin inverse is equal to sec inverse 1 upon root of 1 minus a square. Now cosec, tan inverse, cos, cot inverse, and see sec inverse and sec both are inverse to each other. That is why the composition is possible. So what is the composition of sec inverse and sec? It is root of 1 minus a square. Final answer is cosec, tan inverse, cos. Now cos function is outer function and cot inverse is inner function. So we have to convert cot inverse in terms of cos inverse. So again draw the rectangle triangle. कोट इनवर्स है हमारे पास, कोट इनवर्स 1 upon root of 1 minus a square। कोट इनवर्स की फॉर्मूला है adjacent side upon opposite side, then you can find the hypotenuse. It is 2 minus a square. Now ये हमने फाइंड किया है रूट, राइट? So कोट इनवर्स 1 upon root of 1 minus a square हमारे पास हाई ऑप्शन है। कोट इनवर्स को हम tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sec इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है cos इनवर्स में क्योंकि यहाँ पे आउटर फंक्शन है cos। So cos इनवर्स की बेसिक फॉर्मूला ये है, cos थीटा की बेसिक फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट?
Now we can put cos inverse. यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ. Cot inverse मतलब cos inverse 1/2 minus s स्क्वायर. हर बार यही ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी आउटर फंक्शन है उनका इनवर्स फंक्शन हमें इनर फंक्शन में लाना है. Cosec, tan inverse. Now cos inverse and cos are the inverse to each other, so we can composite it. Now last step. Outer function is cosec and inner function is tan inverse. So I have to convert tan inverse in terms of cosec inverse. Again, right angle triangle will be help us. Tan inverse 1/2 minus s square. The formula of tan theta is equal to opposite side, opponent adjacent side. So you can find hypotenuse. The value of hypotenuse is 3 minus s square. Now I want to convert into cosec inverse. Cosec theta मतलब hypotenuse और opposite side. So what is the value of this is cosec and tan inverse 1/√2 minus s square will be converted into cosec inverse √3 minus s square by 1. So cosec inverse √3 minus s square. Again you can see this is cosec inverse and this is cosec. So the cosec inverse and cosec are the inverse to each other, so we can composite it. And this is the final stroke. It is RHS. You can see this kind of sums will be done by using right angle triangle or interchange numbers of formula. Friends, this chapter is now over here. We will start next chapter, which is 5th chapter, continued and differentiability. Okay.